आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे अनु आंटी को। अनु आंटी आए और सत्संग शेयर करें। Jai Guruji, Sangaji. My name is Anu Munjal and I am from Delhi. So I will narrate my experiences. I'll share my experiences, the lovely, beautiful time which I could spend with Guruji. So I met Guruji in November 2005. They're a friend of mine, a neighbor of mine. She wanted me to, she was telling about Guruji कि गुरुजी महाराज हैं, वो लंगर प्रसाद देते हैं, चाय प्रसाद देते हैं और आपको bless करते हैं और आपकी problems को cure करते हैं. So I was in GK, Greater Kailash, Delhi, and me and my husband, we decided to go to Guruji. So my husband's name is Amit, and we both thought, okay, let's go and meet Guruji. Now we were going in the car, and raste mein my husband said कि मेरे को washroom जाना है. So I told him in the car only कि घर से जाना चाहिए because it's very odd that we will go there and look for the washrooms because हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं and to look for a washroom is again a difficult job. Anyways, so as we entered the Chota Mandir, that is Empire Estate, Guruji was right there on his gaddi, and I had thought that I'm going to ask 1,000 questions घर से चलते हुए. मेरे मन में बहुत प्रश्न थे, बहुत सवाल थे. But the moment I entered and saw Guruji, I was just numb in the sense that I didn't know what to think, how to think. In the sense, I was just blank. Guruji looked amazingly beautiful, majestic, magnanimous, as if I have come to a place which is so divine. मतलब वो definitely it never belonged to earth. It was that kind of a aura where Guruji was there. And bas meri, I just kept on gazing at him, looking at him. And so the moment I entered, Guruji मुझे बोलते हैं घर से bathroom होकर आया करो. And it was very, very embarrassing because हम गाड़ी में वही बात कर रहे थे कि घर से जाना चाहिए. And then Guruji pointed out. So I said, हाँ जी Guruji. And then he asked me, किधरों आए हो? I said, Guruji, GK. कहते हैं गटर कैलाश. I said, हाँ जी Guruji. So he used to call GK as Gatar Kailash. And I was just quiet. I sat down. So Guruji said, love marriage. Now, me and my husband were there. So my husband said, कोई भी बता देगा love marriage है because I am tall, you are short, I am thin, you are fat. So it is easy for anybody to tell कि it's love marriage. So we were talking out our stuff. And then I was wearing one gemstone, green color का emerald मैंने पहना हुआ था हाथ में. So Guruji told me, एक ही पाया हुआ है. I said, Guruji, मेरे को किसी astrologer ने दिया था. ये emerald है. Guruji कहते हैं ऐसे उतार दे ऐ तू ग्रह पायो ने. So I immediately took off my ring which I was wearing and Guruji कहते हैं ऐ ठीक नहीं है ऐ तू ग्रह पायो ने. So I was quiet. Then Guruji told me बैठ जा. So I sat and then Guruji asked me, this was all during the first meeting only. Guruji asked me 10 तनु की चाहिए. I will not lie. Guruji को से मेरे को सब कुछ चाहिए था. I wanted everything from A to Z. And Guruji ने मैंने उन्हें बोला Guruji आपकी blessings चाहिए. I don't know how I could give that answer because अगर मैंने बोला होता ये चाहिए वो चाहिए तो कब का मिल चुका होता. And but the blessings are incessant, never ending. So he again asked me 10 तनु की चाहिए and I told Guruji आपकी blessings चाहिए. He said बैठ जाओ. So I sat. So I loved that place, the aura of the place, loved Guruji. उनमें इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी खुशबू आ रही थी उनके पैरों में, चरण में जब हमने उनके पैर छुए, that हमारे हाथों में भी वो खुशबू ट्रांसफर हो गई थी. So I was knowing it कि I am at one place which doesn't belong to this earth. It is totally divine, and I am in front of a Mahapurush. At that time, I didn't know कि Guruji Bhagwan hai because my faith was not there. But yes, he was definitely divine. And then I kept on going to Guruji on every Thursday and Sunday. मैं जाती थी, हम लोग regular जाते थे. My husband used to go sometimes most of the times I used to go alone, take my car and used to go. So when I used to go there, it was like such magical attraction. My daughter was 4 years old and I used to leave my daughter at home with my husband. I used to just go because मेरा इतना मन होता था कि वहीं पे बैठे रहो, घर आने का मन नहीं करता था वहां से.
So in January 2006, my dad was hospitalized and he was put on ventilator. Doctors said that there are just 10% chances of his survival and he will not survive. So Guruji ka darbar to Thursday se hota tha. So Thursday I went to the mandir and I was sitting there at the Empire State. My eyes were shut. I was sitting at the last seat. And there I had a vision in which Guruji has gone with me to the hospital. पापा का वेंटिलेटर उन्होंने उतारा और he blessed him saying कि ऐसी कोई लोड नहीं है जा ऐश कर. Again we are humans, हमें belief नहीं होता है, we don't believe in miracles. So हमें आज्ञा लेनी होती थी after the langar prasad. So I told Guruji मेरे father बहुत unwell हैं and he's hospitalized. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. So my husband said कि now your dad doesn't have a life. But we went back, and on the next day when I went to the hospital, that was Friday, my father's ventilator had been removed. उनका सारा ventilator उतर चुका था and he was perfectly fine. He was healthy. And I was also, it was very difficult for us to believe कि जो इतना बीमार हो जिसको doctors ने मना कर दिया हो, he's been blessed and he's out of the danger, out of the risk, and all his problems are over. So on next day, I went to say thank you to Guruji. Guruji, thank you, Papa ठीक हो गए. And Guruji told me देखा फिर कर देता. So that was the day of my complete surrender, where I knew कि I am standing in front of Bhagwan. And Guruji, now I to believe that I am so fortunate because we have met Bhagwan, we have met human incarnate of Lord Shiva. I mean, who is the master of the universe and all the parallel universes. And when I had started going to Guruji, I used to have very severe bronchitis. That nebulizers had stopped working on me. मैं बहुत high dosage के steroids भी लेती थी. And also there were few people in our life who were destroying the mental peace of the family, who were creating a lot of confusion, lot of quarrels, lot of tensions. So my thought was that these people should be out of my life. And you will not believe, in no time, जिन लोगों के साथ आपका इतना उठना बैठना था, they were out of my life. And everything, I mean, you cannot imagine कि जो आपके साथ हर रोज उठ बैठ रहा है वो एकदम आपकी लाइफ से कैसे चला गया. Because I believe Guruji blesses you, and when he blesses you, removes all the negative people, whether they are your subordinates, they are your family members, they are your blood relationships, they are your servants, they are your drivers. Guruji सबको हटा देते हैं जो आपके लिए positive नहीं है. So that was my experience. And because now when it was my bronchitis, I used to tell Guruji मैं लोटा लेकर आऊं, मेरे को bless कर दो आप, so that मेरा bronchitis चला जाएगा. Guruji said तेरे को किसी चीज की लोड नहीं है, तू बिल्कुल ठीक है. And I used to argue, Guruji नहीं, आपको नहीं पता चल रहा है मेरे को कितना ज्यादा bronchitis हो रहा है. He says तेरे को कुछ नहीं है. And trust me, today is the day where I do not have anything. I mean, Guruji just takes off all the problems away from your life. He just changed everything. I mean, I was having 0% mental peace जब मैं गुरुजी के पास गई थी. Now it is 100. I mean, in no time it was 100. And I often say कि one who was so low in spirit can take away peace of mind of everybody now. It's that aura. So Guruji blesses you and he gives you that energy, that strength, and that positivity that you can face the world. And trust me, I'm sorry, I'm coughing in between. And trust me, when Guruji is with you, you do not need anybody. Let the whole world be anti you. But if Guruji is with you, आपके पास सब कुछ है. So I kept on going on Thursdays and Sundays, and it was amazing to be with Guruji. I always used to touch his feet, and sometimes I used to also kiss him wherever I could. And I used to tell Guruji, अपना हाथ दो, मुझे आपको kiss करनी है. And he used to give me his hand also. ले फड़ दफा हो, he used to tell me so many times, because मैं उनसे बहुत पूछती थी, गुरुजी मुझे पतला कर दो. कहते थे दफा हो, सैर करया कर, तेनू किसी चीज की लोड नहीं है. And he also said मैं दफा हो, तेरे वेट को बोल रहा हूँ. मतलब he changed my life completely. There were financial issues, they got sorted out. There were health issues, they got sorted out. There were issues with the people, surroundings. Everything Guruji changed. And my parents, I was the only daughter of my parents. I wanted my parents to shift to, I was in South Delhi and they were at North Delhi.
So I wanted my parents to shift to South Delhi with me. One day Guruji asked me कि किधर किधर रहंदे ने तेरे माँ प्यो? I said Guruji, they stay in North Delhi. कहते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ. So that was again a blessing which was given by Guruji, and in no time my parents shifted from North Delhi to South Delhi. And the transition when you are doing it from North Delhi to South Delhi definitely requires a lot of extra funds. But in this case, with blessings of Guruji, हमारे को 5 lakhs बचा ही था. We didn't have to pay extra. And from the second floor, they came on the ground floor, and my parents were very happy, and so was I. And eventually, my parents just shifted right above our house only. We got a house done, made, and on the first floor of my house, my parents shifted. That was his blessing. Guruji आपको किस तरह की blessing देते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो, because we have a very myopic, limited vision. But Guruji can see beyond, and he knows what to give us and when to give us. The calendar is Guruji's, the timing is Guruji's, but he changes everything around you. आप सोच भी नहीं सकते हैं गुरुजी आपको वो दे रहे हैं. यू कांट इवन कॉम्प्रिहेंड व्हाट ही इज गिविंग यू, बिकॉज ये तो फैक्ट है कि आप एक्स सोच रहे हो, गुरुजी आपको एक्स टू द पावर ऑफ इनफाइनाइट देते हैं. सो दैट इज गुरुजी एंड हिज ब्लेसिंग्स. एंड आई बिलीव अगर आप ट्रस्ट करते हो गुरुजी पे तो टेंशन लगाने की कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज या तो फेथ रहेगा या फिर हमारी टेंशन या बेकार के डाउट्स रहेंगे. एंड गुरुजी यूज्ड टू टेल मी अपने प्यो दा सत्संग शेयर कर. कोई भी बहुत सारे मिनिस्टर्स एंड वीआईपी सेलिब्रिटीज आते थे. गुरुजी यूज्ड टू टेल मी कि अपने प्यो दा सत्संग शेयर कर, एंड आई यूज्ड टू डू दैट. एंड ही यूज्ड टू टेल मी one day Amar Singh had come and Guruji said कि ऐसनु 10 उनकी तब किडनीज फेल थी दोनों. So Guruji said ऐसनु 10 एक घट सुनता है and short is 10. Guruji often used to say कि सत्संग short में बताओ, where हम उनकी महिमा ही बताते हैं, not our own sob stories. So and ये फैक्ट है, जिसका सत्संग कर रहे हैं उसका कल्याण, जिसको सुना रहे हैं उसका, और जो कर रहा है उसका भी कल्याण. So that was the way how Guruji reached out to all. And one day I had thought कि मुझे गुरुजी को आज I love you बोलना है. And then when I reached the मंदिर तो गुरुजी ने मुझे फिर से बोला कि सत्संग शेयर कर. तभी सारे बैठे हुए थे, मुरली मनोहर जोशी, मेनका गांधी, शत्रुघ्न सिन्हा, वरुण गांधी, and all these ministers, all these people were there. So गुरुजी ने मेरे को बोला अपने प्यो दा सत्संग शेयर कर. And when I shared it तो मेरे को मन में आया कि आज मैंने गुरुजी को I love you बोलना था, पर अब तो मैं नहीं बोल सकती. But then when the satsang got over, Guruji told me, "जब तू आई सी ताते होर गल सी, हुन तू गुरु बिना नहीं रह सकती." So this is what I wanted to tell him, and I told Guruji, "Guruji, मुझे आज आपको I love you बोलना था, and वही आपने मुझे बोला." कहते हैं love you, love you. So that's how Guruji. गुरुजी हमारे मन के अंदर का एक एक डेड थॉट भी पूरा करते हैं अगर हमारे लिए अच्छा है. हमें भूल जाता है पर वो नहीं भूलते. I'll tell you one more incident. When my husband did not have faith in Guruji the way I had it, and he often used to tell me कि आज मत जाओ, forget it, फिर किसी दिन चला जाओ, whatever. So I used to tell Guruji, Guruji मुझे अमित आने नहीं देता है, मुझे मना करता है. कहते कोई गल नहीं, चंगा मुंडा है. I said आपको चंगा मुंडा लगता है, वो डील करो तो पता चलेगा आपको. ऐसे मैं उसको बोलती थी उनको. एंड ही स्टिल ऑलवेज सेड अमित बहुत चंगा मुंडा है. एंड उन्होंने कह के उसको चंगा बना दिया. मतलब ही इज टोटली अ ट्रांसफॉर्म्ड गाय, एंड ही जस्ट टेक्स एवरीबॉडी टू द गुरुजी's मंदिर, एंड दैट इज हिज सेवा आई बिलीव. एंड गुरुजी ने भी तब अमित को बोला था कि तू बसें भर कर लेकर आ बंदों की, और तब से अमित की वही सेवा है. जो भी अमित से जुड़ता है, ही जस्ट टेक्स देम ऑल टू द मंदिर एंड टू गुरुजी. सो वन डे ही वाज टेलिंग मी कि हम घर में बैठे हुए थे, तो अमित सेड कि क्या गुरुजी यू ऑलवेज कीप डूइंग, अगर गुरुजी कुछ है तो मेरी सिस्टर का नाम बताएं. एंड शी वाज इन लंदन. So her name, she is a doctor by profession, dental doctor, BDS. So after 3 months, इस बात को मैं भी भूल गई थी, and after 3 months, she came to India, and I took her to Guruji. So it was a Guru Purnima day. I very well remember it. And when I took her to Guruji, Guruji मुझे कहते हैं, "ए कौन है?" I said, "Guruji, मेरी sister in law है." कहते हैं, "ननान है तेरी?" I said, "हाँ जी गुरुजी." So जैसे ही उसने मत्था टिका, गुरुजी कहते हैं, "आ गई डॉक्टर चेतना मेहता, BDS, बत्ती दंदा दा सर्वनाश." एंड ही नेम्ड हर. एंड फिर मेरे को आंखों से ऐसे इशारा करके बोलते कि देख मैंने जवाब दे दिया. सो ये बात मैं भूल चुकी थी, बट गुरुजी को याद थी. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, गुरुजी हमारी एक एक बात का उनको खबर होती है, पता होता है. बट
हमें लगता है कि उनको नहीं, बट ही इज लाइक अ स्कैनर। जब हम उनके पास सामने जाते हैं, उन्हें हमारी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जनरेशन सबका पता चलता है। सो दैट इज गुरुजी, ही इज आवर गॉड, आवर गाइड, आवर, वी आर सो फॉर्चुनेट दैट हम उनकी शरण में हैं, बिकॉज in this uncertain times when we don't know what's going to come up next, we are in his sharan, and we are those very fortunate ones जो कि हम हमें गुरुजी ने अपने शरण में लिया हुआ है। एंड आई थिंक वी कैन जस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। वो मालिक हैं हमारे, सब कुछ प्रोवाइडर गुरुजी हैं। सिवाय हम उनके लायक बन जाएं, उनके चरण के धूल के लायक भी बन जाएं, दैट इज ऑल दैट यू नो वी कैन बी। सो वी हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इवेंचुअली। And then I used to really love when Guruji used to talk, and बहुत बारी ऐसा होता था कि गुरुजी इतनी बातें करते थे, और मैंने उनसे बहुत सारे डाउट, सारी बातें इतनी शेयर करी हुई है। मैंने अपनी कार बिना पेट्रोल के चलाई हुई है, कि मेरी अगर गाड़ी चलेगी बिना पेट्रोल के तब मैं मानूंगी आपको। मैंने अपनी पंक्चर्ड कार चलाई हुई है, बट आई हैव done all kind of experiments, but I always my faith was then only complete. One day, Guruji told me Menka Gandhi had put up some exhibition of the religious holy paintings. Ravi Verma की, and so Hayat में थी. Guruji told me जाके मेनका की paintings लेकर आ दो. And I went to the Hyatt hotel. That was long time back, I think in 2006. So I just carried 11,000 with me, and when I reached there, सारी paintings, कोई भी painting 25,000 से कम नहीं थी. सो आई वाज वंडरिंग कि गुरुजी ने अब तो मुझे हुक्म तो मानना है उनका, बट पैसे तो नहीं पड़े, बट एनीवेज चलो आई use the card. And then I suddenly saw two paintings in the corner worth 5,500 each, which is 11,000 in total. I just got them packed and came. So next day when I reached the mandir, I told Guruji, Guruji मैं exhibition पे गई थी and paintings लेकर आ गई. I did not tell कि मैं कौन सी paintings लाई हूँ. तो गुरुजी ने मेनका गांधी को बुलाया, and he told मेनका ए तेरी exhibition which I see and ए शिवा घर ले आई है. So because one of the paintings was Lord Shiva of Kashi Vishwanath. So Guruji already knows everything that we are doing. So मैं आपको वही बता रही हूँ, how Guruji changed my life from 0 to 360 degrees. All the worries, all the things got sorted. It's not that I did not have tough times to face, but Guruji gives you that energy, that positivity, that strength to face the challenges that we come across. And बहुत टाइम आते हैं गुरुजी आपको, मतलब आई थिंक हमारे टेस्टिंग टाइम्स होते हैं। हमें अपना फेथ नहीं खोना है, बस ये फैक्ट है अगर आपका कोई काम होना है वो एंड में ही होता है, बट हाउ योर फेथ वर्क्स, हाउ यू गो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, इट मैटर्स अ लॉट। बट गुरुजी हमारे को कभी भी डूबने नहीं देते हैं, हमारे को हमेशा सेवियर है हमारे वो, और हमेशा बचा लेते हैं। हमारी सोच कहीं और चल रही है, गुरुजी हमें उससे बहुत कुछ बड़ा और बहुत ज्यादा देने में होते हैं। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट इन माई लाइफ। So even if you have a problem, just go ahead with it, because that is just the 10% of we would have what we would have faced otherwise. और वो भी हम गुरुजी के मेहर के बिना नहीं काट सकते हैं। And then one day I'll also share it. I can go on and on with my satsang, because my life is his, my every breath is Guruji, and how he changed everything. My bronchitis was zero, my health became much better. I mean, every front Guruji changed. And one day we were sitting, so Guruji wanted all of us to write our satsangs and compile in the form of CD and bring it to him. So we all took that, and तब मैंने जब सीडी दी अपने experiences की, जो शेयर करे in form of CD, गुरुजी told me CD लेते हुए कि ए ना अमेरिका ਵਿੱਚ कंजर पढ़नगे. Now that time we did not understand, but I believe it meant that this will come on the net, because during that time हमें तो पता भी नहीं था कि कोई book आएगी Light of Divinity के नाम से, when Guruji will not be in his physical form. So this Light of Divinity जो first edition था, उसमें हम सब के experiences थे जो गुरुजी ने हमसे CD के form में मंगवाए थे, and he had told few people that you should bring your experiences, और उन सबके जो live experiences थे वो Light of Divinity जो first वाली आई थी उसी में थे. And we did not know that Guruji would leave us physically, because हमारे लिए तो वो था कि he is a permanently भगवान है हमारे, और जब तक हमारा लास्ट ब्रेथ है तब तक गुरुजी हैं.
but we didn't know it that he would leave us so soon, and we were all very shattered. I used to be so sad कि गुरुजी आप कहाँ गए हो? I just kept on crying, आप गए कहाँ? And that very day he came in my dreams and he told me मैं किधरे नहीं गया हूँ, मैं अपना चोला बदला है. And trust me, Guruji is all the more with us now. We definitely miss the physical presence, but now he is in our heart, in our soul, in every cell of our body. That's Guruji. I mean, the amount of love which we have got from Guruji is definitely not in the human capacity. It is totally divine, 100%. Full of energy, full of empathy, full of affection. That's only the love of God which we can get, and Guruji has given us that. And Guruji was so amazingly um, beautiful in every way. He wanted us to be looking our best, getting our getting dressed up very well. And he wanted us to be up to the date, up to mark. He said, I mean, the way he used to be so good looking, so magnanimous कि हमें भी वैसा रहना है because हमें उनके लायक बनना है from the heart, from the soul. And I mean, I cannot say anything but thank you to him for every moment, every time, every shun that he had spent with us. And still, I mean, the life is a miracle because हमें गुरुजी हमारी life में है. I have shifted to Bombay now from Delhi. And again, the satsang is very big. But Guruji, जब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कोई भी टेंशन, कोई भी वरी होती नहीं है बिकॉज आपको पता है आपके साथ आपके सबसे बड़े मालिक आपके साथ हैं. एंड गुरुजी इज आर लाइक अ प्राइवेट गॉड हु लिसन्स टू एवरीथिंग दैट वी वांट. गुरुजी आपको हर चीज देते हैं. ही फर्स्ट ब्लेसेस यू विद लाइफ, देन हेल्थ, एंड देन एवरीथिंग इज अ साइड इफेक्ट. हम लोग कहते हैं रोटी प्रसाद में ओम बन गया, हम कहते हैं जल आ गया, या यू नो मतलब समाधि, नॉट समाधि, फोटोग्राफ्स में अमृत आ गया. आई बिलीव दिस इज ऑल अ साइड इफेक्ट. हमें भगवान मिल गया है. एंड इट्स सच अ बिग थिंग एंड फ्रक्टिफिकेशन ऑफ ऑल आवर गुड कर्मास ऑफ द पास्ट, of our janmas, that we have got Guruji and हम उनकी शरण में हैं. So we cannot be thankless. We can just be saying thank you. और हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ उन्हें thank you. And we can be a good human being every day. Still we do a lot of mistakes, errors, but we can be a good human being. And that's a constant effort that we have to be in. And we have to say thank you to him for everything, just the gratitude. And the life is very, I mean, he can do anything in life. Life is very beautiful. And I have seen those major changes coming in my life in every front. And up to Guruji pure world ke hai. So how he is blessing, that is again amazing. Thank you everybody. Thank you Sangaji. That's all I have to share. Maybe next time. I still have a lot to share, but I think time is also getting this thing. So thank you everybody. Jai Guruji. Thank you. Chalo, I'll share one more thing which I just remembered. Two things rather, I will just share. So this was I had a dog named Freddy. He is no more in the world now. So when he was about 6 to 7 years old, तो गुरुजी का मैं आपको बताती हूँ वो आपके घर में किस तरह आपके हर मेंबर का ध्यान रखते हैं इंक्लूडिंग द पेट्स. सो गुरुजी, हम लोग फ्रांस गए हुए थे एंड देयर आई हैड अ ड्रीम इन विच गुरुजी ने मुझे बोला आके कि फ्रेडी का ध्यान रखा कर. एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड. हम तो बहुत रखते थे कि क्यों बोला है उन्होंने. सो दैट वेरी मोमेंट व्हेन आई केम बैक टू दिल्ली, India, from the trip, I came to know that my domestic help used to beat my dog. और वो तो मुझे नहीं पता था, but वो yes, गुरुजी को तो obviously पता है. That's why he came in my dreams and told me. So I immediately removed my domestic help. And that's how गुरुजी works. मतलब वो एक ऐसे भगवान है जो आपकी हर एक एक डिटेल को आपका पता है, उनको पता है. मतलब आपको नहीं मालूम है आपके घर में क्या हो रहा है, बट गुरुजी knows everything. And my husband's grandmother also expired. That time गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप था हमारे घर में, and I used to wear a pendant गुरुजी वाला. So one day, during that prayer ceremony, somebody was there and he asked me ये कौन है. तो I told कि ये मेरे beloved है. I never call गुरुजी as my father. I always call him as my beloved, because fathers के साथ आप फिर भी हर चीज नहीं शेयर कर सकते हो, but with your beloved you can talk anything.
तो गुरुजी वो मैंने उनको बोला कि मेरे बिलवड हैं, तो एनीवेज वो बिल्कुल चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। बाद में उसने मेरे को बताया कि गुरुजी तो वहीं पर खड़े थे तब रेड कलर के चोले में। I mean, the prayer ceremony was on, and my husband's grandmother had expired. So Guruji was right there as a family member. So the point is कि हमें तो नहीं पता लग रहा था, but वो as an outsider he was saying कि वो तो वहीं पर खड़े थे. So see again how Guruji works. हमें तो नहीं पता है what he is doing with us, but he is all the time with us. And when it comes to my father, Guruji had blessed him with his life in 2006, and my father just passed away last year. And he got such a big life extension. And my father had a desire that he should live till 80, and he actually died after he celebrated his 80th birthday. So that's how he does. And my father was in. I will just share. This is the last year's satsang when my father was again in the hospital and he was put on the ventilator, and he was very restless, and he doesn't didn't want the ventilator to be you know continued. So he was telling me that isko hatwao, and somehow I told the doctors ki aap ye hata dijiye. Now when it got removed, my father he was very restless, and his carbon in the brain had gone up, and he was feeling that mujhe yahan se leke jao. So I just prayed to Guruji. It was the Mahasamadhi Divas that time, and I was going to the mandir. But my father said, "No, you stay with me. Don't go." So I was just praying, and then in again while I was praying, हमने अपने घर में ही गुरुजी का एक मंदिर बनाया हुआ है. So I was sitting there, and then Guruji came in my vision again, and मुझे ऐसे लगा कि पापा के पास वो फिर से आईसीयू में गए हैं, एंड उन्होंने जाके पापा को बहुत शांत करा है, काम करा है, जो एंक्शियस हो रहे थे वो. And Papa was in 8 number ward. There was another ward near. I think it was 7 or 9. I don't remember it exactly. उनमें भी एक patient था. That patient was not well at all, and he was put on the. He was not conscious for many days. तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने उसके भी सर पर हाथ रखा है and उसको bless करा है. So next day when I went to the ICU, I could see my father was extremely quiet and calm. एंड वो जो पेशेंट थे वो बहुत टाइम से हिले नहीं थे. एंड गुरुजी जब मेरे को विजन में दिखा कि उन्होंने गुरुजी ने उनको भी ब्लेस करा है, तो उनके रिलेटिव्स मिले और उन्होंने हमें बोला कि बहुत टाइम बाद इन्होंने मूवमेंट करी है. सो दिस इज अगेन हाउ गुरुजी ब्लेसेस यू. एंड हमें नहीं पता. एंड देन आई टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने ब्लेस करा है आपके इनको. तो ही सेड ये वही गुरुजी हैं जो छतरपुर वाले हैं. एंड ही ऑल्सो दे ऑल्सो बिलीव्ड इन गुरुजी. सो गुरुजी की एनर्जी कहाँ से कहाँ जाती है, this is unexplainable. And I'll share one very important satsang which I forgot. My husband's nephew, brother's son, he was 8 years old, and he was very unwell, and he had this problem called GB syndrome, which is called Guillain-Barré syndrome. That is 1 in a million. उसमें आपकी पूरी बॉडी जो है it become like a vegetable. You are totally on the life support system. And वो 8 years का बच्चा, he was put on the life support system. Now it was during that time when in 2000 we had been going to Guruji, but अगर हम we did not tell them about Guruji, because जब बंदे को एक मन में बहुत सारे, जब बीमार होते हो तो रॉन्ग ख्याल भी आ रहे होते हैं कि अब कहाँ जा रहे हैं, ये किधर का बता रहे हैं हमें. सो वी डिडंट से, बट आई प्रेड टू गुरुजी कि गुरुजी इस बच्चे को ठीक करो. एंड गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली ऐसे बोला कि मैंने उनसे पूछा कि इसका वेंटिलेटर कब उतरेगा, एंड गुरुजी टोल्ड कि इट विल बी डन ऑन वेडनेसडे. एंड ट्रस्ट मी, इट वाज द फर्स्ट वेडनेसडे ओनली वाज द फर्स्ट डे जब उस बच्चे का वेंटिलेटर उतरा. एंड गुरुजी, हाउ गुरुजी वर्क्स, जो उस बच्चे की नर्स थी, आई मीन डॉक्टर थी, वो भी गुरुजी की भक्त थी. उन्होंने गुरुजी का स्वरूप उनके पिलो के नीचे बच्चे के रख दिया था. एंड इज इन नो टाइम दैट बच्चा जस्ट रिकवर्ड. एंड जो एक इतना वेंटिलेटर पूरे सपोर्ट पे चला गया था, ही वाज जस्ट 100% ओके. एंड आफ्टर दैट ही बिकेम अ फुटबॉल प्लेयर. ही इज एन इंजीनियर, नाउ इज इन कनाडा. सो हाउ ही ब्लेसेस, मतलब गुरुजी के जो ब्लेसिंग्स हैं वो इतनी इमेंस है कि हमें पता भी नहीं चलता. वी कांट इवन फिगर आउट कि वो कहाँ से क्या कन्वर्ट कर रहे हैं. एंड दैट्स अ फैक्ट. गुरुजी भी कहते थे 20-20 साल हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी ब्लेसिंग्स क्या है. एंड ही, हमें सिर्फ गुरुजी से गुरुजी को ही मांगना है, आई बिलीव, बिकॉज बाकी सब चीजें तो मिल ही जाती हैं.
They are like side effects. If we ask Guruji from him, that is all, that we can need, all that we want. So again, thank you to Guruji, Shukrana to him for every bit, every blessing, every breath that we take. And thank you, Guruji. I can again, let me do it with more, come up with more satsangs next time and share with you, because it's just the impromptu and whatever I could remember, I'm just sharing it with you. But yes, my life is a satsang for sure, and he completely changed and metamorphosed it. Thank you, Guruji, and thank you, Sangaji, for listening to it. Thank you.